हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। टुडे वी विल टॉक अबाउट द हॉर्स। हॉर्स इज़ अ ब्यूटीफुल एनिमल। हॉर्सेस की जो ब्रीड्स हैं वो तकरीबन 400 के करीब हैं और इसकी एग्जिस्टेंस दुनिया में जो डिस्कवर हुई वो 55 मिलियन ईयर्स अगो की है। देन इसको इंसानों ने यूज़ करना शुरू किया, वो तकरीबन 4000 साल से यूज़ कर रहे हैं। हॉर्स को अरबी में हिसान कहा जाता है, हॉर्स को उर्दू में घोड़ा कहा जाता है, हिंदी में भी घोड़ा कहा जाता है, रशियन लैंग्वेज में इसको लौशाद कहते हैं। रशिया का सबसे फेमस जो घोड़ा था वो ट्रोटर था। जैपनीज़ लैंग्वेज में इसको उम्मा कहते हैं, कोरियन इसको माल कहते हैं एंड स्वीडिश इसको हेस्ट कहते हैं, जर्मन इसको प्रेफर्ड कहते हैं। सो हॉर्स इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल एनिमल। Horse can run 88 kilometers per hour, and an adult horse at rest should have a body temperature 99 to 101.5 degrees Fahrenheit, and in centigrades 37.5 degrees centigrade to 38.5 degree grades, and the horse weight is 700 to 1000 kgs. In simple terms, horses eat grass and hay, but salt concentrates and fruits and vegetables can also enhance their diets depending on their required work regime and available feed. Human began domesticating horses around 4000 BC. 4000 साल पहले इंसानों ने घोड़े को पालना शुरू किया. So the horse is a domesticated mammal. It belongs to the taxonomic family. और घोड़े को इंसानों ने 4000 कबल मसीह के आसपास पालना शुरू किया और ख्याल किया जाता है कि 3000 कबल मसीह तक इनका पालने का अमल बड़े पैमाने पर हुआ था. केबल्स की ज़ेली नस्लों में घोड़े पाले जाते थे. हालांकि कुछ पालने वाली आबादी जंगली घोड़ों के तौर पर जंगल में रहती थी. ये जंगली आबादी हकीकी जंगली घोड़े नहीं है, क्योंकि इस इस्तिलाह से मुराद ऐसे घोड़े हैं जिन्हें कभी पाला नहीं गया था. घोड़ों से मुतल्लिक़ तस्वुरात को बयान करने के लिए एक वसी मखसूस अल्फाज का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें एनाटमी से लेकर ज़िंदगी के मराइल, साइज़, रंग, निशानात, नस्लें, नकलो हरकत और तर्ज अमल तक हर चीज़ का अहाता किया जाता है. So domesticating is believed to have been widespread by 3000 BC. Horses is the species capable as are domesticated. Although some domesticated populations live in the wild as feral horses, these feral populations are not true wild horses, as this term refers to horses that has never been domesticated. There is an extensive specialized vocabulary used to describe related concept covering everything from anatomy to life stage, size, color, markings, breeds, locomotion and behavior. So घोड़ों की नस्लों को आम मिजाज की बुनियाद पर ढीले तरीके से 3 ज़ुमरों में तकसीम किया गया. Horses are adapted to run, allowing them to quickly escape predators and possess an excellent sense of balance and a strong fight or flight response. Related to this need to flee from predators in the wild is an unusual trait. So horses are able to sleep both standing up and lying down. घोड़े जो होते हैं वो खड़े होकर भी सो सकते हैं और लेट के भी बैठ के भी सो सकते हैं. With younger horses tending to sleep significantly more than adults. Female horses called mares carry their young for approximately 11 months
and a young horse called a foal can stand and run shortly following birth. घोड़ों को तारीख़ी तौर पर जंग में इस्तेमाल किया जाता है, जिससे मुख्तलिफ़ किस्म के साज़ो सामान और कंट्रोल के तरीक़ों का इस्तेमाल करते हुए सवारी और ड्राइविंग की टेक्निक्स जो होती हैं वो, और उसकी बहुत ज़्यादा वसी अक़साम है। बहुत सी मसनूआत घोड़ों से हासिल की जाती हैं, बशमूल गोश्त, दूध, खाल, बाल, हड्डी और यानी जो प्रेग्नेंट घोड़ियाँ होती हैं उनके पेशाब से जो है वो निकाली जाने वाली अद्वियात जो है इंसानी पालतू घोड़ों की खुराक, पानी और पनाहगाह फराहम करते हैं, और साथ ही माहिरीन की तरफ से तवज्जो भी देते हैं, जैसे कि जानवरों के डॉक्टरों और बहरी जहाज़ों से। सो देयर इज़ अ बिटवीन 25 and 30 years लाइफ स्पैन। इसकी जो एवरेज अडल्ट की उम्र है वो 25 से 30 साल तक होती है। हॉर्सेस ब्रीड आर लूजली डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज बेस्ड ऑन जनरल टेम्परामेंट, spirited hot bloods with speed and endurance, cold and heavy work, warm bloods उनको कहा जाता है। So particularly in Europe there are more than 300 breeds in horses in the world today. यूरोप में तकरीबन 300 किस्म के इस वक्त घोड़े हैं जो ज़्यादातर मशहूर हैं और जो यूज़ किए जाते हैं। Horses or women interact in a wide variety of sport competitions and non-competitive recreational pursuits, as well as working activities such as police work, agriculture, entertainment and therapy. Horses were historically used in warfare, from which a wide variety of riding and driving techniques, so many products are derived from horses, including meat, milk, hide, hair, bone, and extracted from the urine of pregnant mares. Women provide domesticated horses with food, water, and shelter, as well as attention from specialists. So घोड़े और इंसान मुख्तलिफ किस्म के खेलों के मुकाबलों और गैर मसाबकती तफरी सरगर्मियों के साथ साथ पुलिस के काम, ज़राअत, तफरी और थेरेपी जैसे काम करने वाली सरगर्मियों में भी बातचीत करते हैं। सो घोड़ों को तारीख़ी तौर पर जंग में इस्तेमाल किया जाता था, जिससे मुख्तलिफ़ किस्म के साजो सामान और कंट्रोल के तरीक़ों का इस्तेमाल करते हुए सवारी और ड्राइविंग की तकनीक की वसी इक़साम मौजूद हैं। इसका जो इस्तेमाल है वो गोश्त भी किया जाता है, दूध भी किया जाता है, खाल भी की जाती है, बाल भी किए जाते हैं, हड्डी भी की जाती है, और वो दवाइयों में भी इस्तेमाल होता है, जिस तरह वो जदीद तहकीक ने साबित किया है कि ये दवाइयों में भी इस्तेमाल होते हैं। इसका जो लाइफ स्पैन है और जो इसकी लाइफ के स्टेज हैं वो डिपेंड करता है इसकी ब्रीड पर। Lifespan and life stages depending on breed, management and environment. The modern domestic horse has a life expectancy of 25 to 30 years. Uncommonly, a few animals live into their 40s and occasionally beyond. The oldest verifiable record was Old Billy, a 19th century horse that lived to the age of 62. 19वीं सदी में एक घोड़ा 62 का होके फौत हुआ था, यानी वो जो घोड़ा था वो मशहूर था कि उसकी सबसे ज़्यादा एज थी। And in modern times, Sugar Puff, who had been listed in Guinness World Record as the world's oldest living, died in 2007 at the age of 56. 56 साल की उम्र में इसकी डेथ हुई थी। और ये जो इसका गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बुक में भी इसका नाम है।
So regardless of a horse or pony actual birth date, for most competition purpose, a year is added to its age each January 1 to each year in the northern hemisphere and each August 1 in the southern hemisphere. The exemption is in endurance riding, where the minimum age to compete is based on the animal actual calendar age. So if we will talk about the 1 साल से कम उम्र के किसी भी जिनस का घोड़ा दूध पिलाने वाले बछड़े को कभी कभी दूध और छुड़ाने वाले जानवर को दूध छुड़ाना कहा जाता है। ज़्यादातर पालतू जानवरों को 5 से 7 माह की उम्र में दूध छुड़ाया जाता है, हालांकि 4 माह में बगैर किसी मनफी जिस्मानी असरात के झाड़ियों का दूध छुड़ाया जाता है। किसी भी जिनस का घोड़ा जिसकी उम्र 1 से 2 साल के दरमियान हो, यानी एक कोल्ट उसको कहते हैं। कोल्ट 4 साल से कम उम्र का नर घोड़ा, वो कोल्ट उसको कहते हैं। उसके बाद फिली 4 साल से कम उम्र का घोड़ा, घोड़ी एक मादा घोड़ा जिसकी उम्र 4 साल और उससे ज़्यादा थी, उसको फिली कहते हैं। उसके बाद 4 साल और उससे ज़्यादा उम्र का एक गैर कास्टेड नर घोड़ा, इस्तिलाह में उसको घोड़ा कहते हैं, यानी बोल चाल में इस्तेमाल किया जाता है, ख़ास तौर पर घोड़े का हवाला देने के लिए किसी भी उम्र का नर घोड़े को, यानी किसी भी उम्र का जो नर घोड़ा है उसको ये नाम दिया जाता है। सो इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट द skeleton system, skeleton system of horse, skeletal system of horse, diagram of a horse, it's a major part. Skeletal system of modern horse is also very strong, and horse skeleton average have bones around 205 bones. यानी जो घोड़े का जिस्म का निज़ाम होता है, ये जो स्ट्रक्चर होता है जो वो 205 हड्डियाँ होती हैं घोड़े की, यानी घोड़े के 205 हड्डियाँ होती हैं। इसमें आपको ये भी बताते चलें कि a significant difference between the horse skeleton and that of a human is the lack of a collarbone. The horse's forelimbs are attached to the spinal column by a powerful set of muscles, tendons and ligaments that attach the shoulder blade to the torso. So the horse's forelegs and hooves are also unique structures. Their leg bones are proportions differently from those of a human. For example, यानी इसका जो स्ट्रक्चर है वो इंसानी निज़ाम से मुख्तलिफ होता है। उसमें जो चीज़ें मुख्तलिफ हैं उसमें डेफिनेटली इफ़ वी विल कॉल अबाउट द कॉलर बोन, इफ़ वी विल कॉल अबाउट द फोर लेग्स एंड, यानी मिसाल के तौर पे जिस्म का वो हिस्सा जिसे घोड़े का घुटना कहा जाता है, दरअसल कार वो पुल हड्डियों से बना होता है जो कि इंसानी कलाई के मसावी होते हैं। इस तरह हाक में इंसानी टखनों और एड़ी के बराबर हड्डियां होती हैं। घोड़े के निचली टांग की हड्डियां इंसानी हाथ या पाँव की हड्डियों के मसावी होती हैं और फैटलाक यानी टखना जो कहलाते दरअसल तोप की हड्डियों के दरमियान कुर्बत की हड्डियां होती हैं। सो इसका स्ट्रक्चर बड़ा ज़बरदस्त, बड़ा मज़बूत स्ट्रक्चर होता है, जिस स्ट्रक्चर में ये दौड़ने की, भागने की, ज़ोर दिखाने की और horse also has no muscles in its legs below the knees and hocks. So if we will talk about the power of horse is a very powerful structure. Domestication of the horse most likely took place in Asia prior to 3500 BC.
Two major sources of information are used to determine where and when the horse was first domesticated and how the domesticated horse spread around the world. यानी घोड़े को पालने का इम्कान गालबन वस्ती एशिया में 3500 साल पहले का है, और मालूमात के दो बड़े ज़राए हैं वो ये बताते हैं कि इसको कब पाला गया और कहाँ पाला गया। पहला कदीम और आसार कदीमा का जो दरियाफ्त है उसमें कदीम घोड़ों की हड्डियों और दांतों से जदीद घोड़ों से हासिल करदा DNA का मुवाजना किया गया है। घोड़े को पालने के बारे में कदीम तरीन आसार कदीमा के सबूत यूक्रेन और काज़किस्तान के मकामात पर मिलते हैं, जिनकी तारीख तकरीबन 4000 साल पुरानी है। घोड़े को मुकम्मल तौर पर पाल लिया गया था और 2000 कबल मसीह तक शुमाल मगरबी यूरोप में इंसानी बस्तियों में पाए जाने वाले घोड़ों की हड्डियों की तादाद में तेज़ी से इजाफा होगा, जो पूरे बरआज़म में फैलती चली गई। उनसे निशानदेही होती गई और पता चलता गया कि कितना अरसा पहले घोड़ा दुनिया में मौजूद था। अगर हम 2100 कबल मसीह 2021 के एक जीनियाती मुताला ने तजवीज़ किया कि ज़्यादातर जदीद घरेलू घोड़े निचले ओलंगाडान के इलाके से आते हैं। इफ़ वी वर टॉकिंग अबाउट यूक्रेन एंड काज़किस्तान, तो पहले वहाँ पे घोड़े इस्तेमाल होना शुरू हुए यूक्रेन और काज़किस्तान में। मौजूदा दौर के घोड़ों के जीनियाती मवाद का इस्तेमाल करते हुए आसार कदीमा और कदीम खुदाइयों में पाई जाने वाले घोड़ों की हड्डियों और दांतों से मौजूद जीनियाती मवाद से मुवाजना करके घरेलू साजी का मुताला किया जाता है। जीनियाती मवाद में तब्दीली से पता चलता है कि बहुत कम जंगली घोड़े घरेलू घोड़ों में हिस्सा डालते हैं, जबकि बहुत से घोड़े इब्तदाई पालतू जानवरों का हिस्सा थे। ये DNA के दरमियान जीनियाती तगैर में फ़र्क से ज़ाहिर होता है, जो पिदराना या साइज लाइन बमुकाबला जिचकी या डेम लाइन के साथ गुजरता है। क्रोमोसोम तगैरात की बहुत कम सतह हैं, लेकिन माइटोकॉन्ड्रियल DNA में बहुत ज़्यादा जीनियाती तगैर है। घरेलू रेवड़ में जंगली घोड़ों की शमूलियत की वजह से माइटोकॉन्ड्रियल DNA में इलाकाई तगैरात भी हैं। पालने की एक और ख़ासियत कोट के रंग की तब्दीली में इजाफा है। घोड़ों में इसमें 5000 और 3000 BC के दरमियान ड्रामाई तौर पर इजाफा हुआ है। घोड़े के पालने से मुतल्लक बहुत से मफरूज़े और बहुत सी बातें मौजूद हैं जो मुख्तलिफ़ किताब में मुख्तलिफ़ जगह पे मिलती हैं। There are very low level of chromosome variability, and there is a genetics. So many things are there about their DNA. After the DNA, so many things are there about horses. We were talking about foal. A horse of either sex less than 1 year old, a nursing foal, is sometimes called a suckling, and a foal that has been weaned is called a weanling. Most domesticated foals are weaned at 5 to 7 months of age, although foals can be weaned at 4 months with no adverse physical effects. These are the following terminology used to describe horses of various ages. So this is different ages. Now, yearling, a horse of either sex that is between 1 and 2 years old, called yearling. So when we are talking about colt, a male horse under the age of 4, a common terminology error is to call any young horse a colt, when the term actually only refers to young male horses. Then we were talking about the filly. What is filly? A female horse under the age of 4, called filly. यानी ऐसी घोड़ी, फीमेल घोड़ी जो 4 साल से छोटी होती है, उसको फिली कहा जाता है। एंड देन वी आर टॉकिंग अबाउट मेयर, अ फीमेल हार्स 4 years old एंड ओल्डर, 4 साल से ऊपर जो होती है उसको मेयर कहते हैं, MARE, मेयर। So
So Stalin कहते हैं a non-castrated male horse 4 years old and older. The term horse is sometimes used colloquially to refer specifically to stallion. So gelding, a castrated male horse of any age. So these definitions may differ, but for example, the British thoroughbred horse and racing defines colt and fillies as less than 5 years old. जैसे हम आपको 4 साल कह रहे हैं तो वो 5 साल तक उसको फिली और कोल्ट कहते हैं, उसके बाद उसका जो है वो नाम चेंज होता है. So we have talked about genetics. Horses have 64 chromosomes. Horses was skewed in 2000 contains 2.7 billion DNA base pairs, which is larger than the dog genome. So genetically, but smaller than a human genome, or इंसानों के जीनोम से smaller हैं, but still in DNA there are 2.7 billion. So reproduction and development has also, with an average range 320 to 370 days is the approximately, is the range, and usually result in one foal, twin or rare. We are talking about the reproduction and development of horse. Horses are a species. The foals are capable of standing and running within a short time following birth. Foals are usually born in the spring, and mares occur roughly every 19 to 22 days and occurs from early spring into autumn. Most mares enter, and horses, particularly colt, are sometimes physically capable of reproduction at about 18 months. But domesticated horses are rarely allowed to breed before the age of 3, especially females. Horses 4 years old considered matured. So, if we will talk about the teeth, horses, there are 24 teeth adapted for chewing and at the back of the mouth. Stallions and gelding have 4 additional teeth just behind the incisors, a type of canine teeth called tushes. So some horses, both male and female, will also develop one of the 4 very small vestigial teeth in front of the molars, known as wolf teeth. So if we will talk about the senses are based on their status as prey animals, where they must be aware of their surroundings at all the times. They have the largest eyes of any land mammal, and their eyes are largest eyes as a mammal. No one mammal have eye like that, meaning that their eyes are positions on the sides of their heads. This means that horses have a range of vision of more than 350 degrees, with approximately 65 degrees of this being binocular vision and the remaining 285 degree monocular vision. So 65 degree binocular vision and 285 degree monocular vision. Horses have a great sense of balance, due partly to their ability to feel their footing and partially to highly developed proprioception, the unconscious sense of where the body and limbs are at all times. Our sense of touch is well developed. The most sensitive areas are around the eyes, ears, and nose. Horses are able to sense contact as subtle as an insect landing anywhere on the body.
यानी हार्स के ऊपर, घोड़े के ऊपर कहीं भी कोई छोटा सा कीड़ा भी बैठ जाता है तो वो उसको सेंस हो जाती है कि मेरी बॉडी पे कुछ है. सो ऑल horses move naturally with 4 basics. The 4 beats walk, the 2 beats trot or jog, the canter or lope, and the gallop, where average 40 to 80 kilometers per hour. So if we will talk about the behavior, horses are with a clear hierarchy of rank led by a dominant individual, usually a male. There are also social creatures and are able to form companionship attachment to their own species and to other animals. So if we will talk about their sleep pattern, horses are able to sleep both standing up and laying down. In an adaptation from life in the wild, horses are able to enter light sleep by using a stay apparatus in their legs. So unlike humans, horses do not sleep in a solid, unbroken period of time, but take many short period of rest. So if we will talk about their domestication and history, they came 3500 BC in Asia, and major sources of information determine horses was first domesticated, how the domesticated horse spread around the world. So there are different breeds, so many breeds in this world, and also they have a good interaction with humans worldwide. Horses play a role within human cultures and have done so for millennia. Horses are used for leisure activities, sports, working purpose. Food and Agriculture Organization estimates that in 2008 there were almost millions of horses in the world, with around with 33 million and 50,000 33 million and 500,000. Yeah, 33 million and 500,000 in Americas, and 13 million and 80,000 in Asia, and 6 million and 300,000 in Europe, and also Africa. There are estimated to be 9 million and 500,000 horses in United States. So in a 2004 poll conducted by Animal Planet, more than 50,000 viewers from 73 countries voted for the horse as the world's 4th favorite animal. कि दुनिया में ये चौथा फेवरेट एनिमल है. Communication between human and horse is a paramount in any question activity. To aid this process, horses are usually ridden with a saddle on their backs to assist. So historically, if we will talk about sports, entertainment, horsewomen friendship then was needed in the battle. Many sports such as dressage, eventing, show jumping, military training, tent pegging, which were focused on control and balance of both horse and rider. Other sports such as rodeo, ranches and station. So sports hunting from horseback involved. So if we will talk about the work of horse, there are certain jobs that horses do very well, and no technology has yet developed to fully replace them. For example, mounted police horses are still effective for certain types of patrol duties and crowd control. Cattle ranches still require riders and horseback to round up. घोड़ा घास खाने वाला इंतहाई वफादार जानवर है. इन सिंपली टर्म, हॉर्सेस ईट ग्रास. ये घास खाते हैं.
और इनकी जो बॉडी का टेम्परेचर है वो 99 डिग्री से 101.5 डिग्री तक होता है। घोड़े की जो रेस है, घोड़ा 88 किलोमीटर दौड़ सकता है, किसी की 85 है, किसी की 83 है, किसी की 90 तक किलोमीटर तक जो है ये रफ्तार से दौड़ सकता है घोड़ा। घोड़े को अरबी में हिसान कहते हैं, स्वीडिश में हेस्ट कहते हैं। पूरी दुनिया में ये पसंद किया जाता है, लोग इसे पेट बना के भी रखते हैं। ये डोमेस्टिकेटेड है और लोग इससे बहुत प्यार करते हैं। तो दुनिया के तमाम हिस्सों में, हर इलाके में घोड़ा पाया जाता है और बहुत से शौकीन लोग हैं जो इसको रखते हैं। सो द हॉर्स इज़ इन अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, एवरीवेयर इन द वर्ल्ड।